the strain कौन so strain कुछ resultant of stress कौन सी रॉक पर यदि हमें फोर्स पकड़े स्ट्रेस अप्लाई करसु ताले तार शेप चेंज होची बा डिफॉर्मेशन होची कुछ आ गोटे शेप को जो कन्वर्ट होची तर किछला चेंजेस होची सो जहाँ चेंजेस होची ताको हम कहते स्ट्रेन so strain it is the resultant of stress जब तुम्हें स्ट्रेस को डिफाइन करो डिफरेंट डायरेक्शन में स्ट्रेस अप्लाई हुए होमोजेनियस देखो तो सब जगह समान डायरेक्शन समान अमाउंट रो फोर्स पड़थो बा स्ट्रेस पड़थो रे हेटेरोजेनिटी आसीबो हेतु हम ताको इलिप्सॉइड रिप्रेजेंट करतो जेबा स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करतो स्ट्रेस इलिप्सॉइड जेतले तुम्हें गोटे डायरेक्शन में अधिक स्ट्रेस दबो ताको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तार स्ट्रेन ता तुम्हें पाइ सपोज गोटे रॉक अछि आमे धर एठी स्ट्रेस पकाउछंती है यदि एटा सिग्मा 1 हला सिग्मा 1 हला कोन मैक्सिमम तो एटा यदि मैक्सिमम स्ट्रेस हला तले आमे ताकू परपेंडिकुलर करके मैक्सिमम स्ट्रेन पाइबा तो आमे स्ट्रेन को डायरेक्शन अधिक पाइबा ए डायरेक्शन में अधिक स्ट्रेन पाइबा तो जो डायरेक्शन तुमे प्रेशर पकाउछ तार परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तुमे मैक्सिमम स्ट्रेन पाइबा तो सेमती जेतले अनइक्वल अमाउंट रो स्ट्रेस पड़िबो माने अनइक्वल अमाउंट रो स्ट्रेन पड़िसो डिफरेंट डायरेक्शन में तो ताको हम रिप्रेजेंट करंती स्ट्रेन इलिप्सॉइड so this is a strain ellipsoid जब हमें स्ट्रेस कंडीशन रे सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 यूज करथले बट एठी हम यूज करा कोन x y z मतलब यूनिवर्सली यूज करा जाए x y z x is the greatest principal strain axis z is the minimum principal strain axis y is the intermediate तो जो डायरेक्शन में तमे सबटारो अधिक स्ट्रेन पाउछ ताको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सबटारो अधिक स्ट्रेस करबे हला माने x डायरेक्शन में तुमे मैक्सिमम स्ट्रेन पाउछ ताले x डायरेक्शन ता होची मिनिमम स्ट्रेस डायरेक्शन हला माने x टा हिजो एठी कोन सिग्मा 3 से तो कोइंसाइड करिवो z टा कोइंसाइड करला सिग्मा 1 से y टा सिग्मा 2 से तो कोइंसाइड सो इट इज कॉल्ड एज strain ellipsoid. So different type of strain ellipsoid can be determined by taking the ratio of strain axes. Strain axis का ratio को लेके व length को लेके different type of strain determine करा है. तो हमें axial ratio नहीं होती x by y और y by z. x होता है हमारा greatest, y intermediate, z होची least, y intermediate. So x by y का ratio और z y by z का ratio लेके करा है. तो आपको रिप्रेजेंट करा जाए वो डायग्राम में जो डायग्राम का कौन सी फिन डायग्राम डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेन ellipsoid वो फिन डायग्राम में रिप्रेजेंट करा है. सो तापे गोटे पैरामीटर सेट करा जाए फास्ट होसी k तो k टा को हम केमती कैलकुलेट करंती k कैलकुलेट कर परिबा 1 minus x by y x by y minus 1 by y by z minus 1 that is the value of k जो k अछि k रो वैल्यू यूज कोन x by y minus 1 y by z minus 1 तो मतलब जो हमें स्ट्रेन इलिप्स कहले डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेन इलिप्स देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेन इलिप्स ताको हम कहि परिया होमोजेनियस स्ट्रेन इलिप्स सब डायरेक्ट तुम्हारा होमोजेनियसली स्ट्रेस पडुचे एंड डिफरेंट टाइप ऑफ इलिप्स प्रोड्यूस होबो जेतबे तुम्हारा स्ट्रेन रो कंडीशन डिफरेंट आसी तो हमें पढ़ले कि गोटे जो नॉर्मल स्ट्रेन इलिप्स का कंडीशन कले उतरे कि x is greater than y greater than z this is the normal strain ellipse condition there are other conditions also there are other three conditions that we will find
different types of strain ellipse. ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ condition ନେଉଛନ୍ତି x greater than y equal to z. x greater than y means x direction ରେ ଯେତିକି strain ହେଉଛି it will be greater than y and z. यदि x direction ରେ ଯେତିକି strain ହେଉଛି, the strain you will find along x direction it is greater than y and y is equal to z. ताମାନେ x direction ରେ ଯେତିକି ତମେ strain ପାଇବ y ଆଉ z direction କୁ ଅଧିକ ପାଇବ, but y ଆଉ z direction ରେ equal strain ପାଇବ. So it will produce a type of ellipse বা strain ellipse, type of strain ellipse से produce करें. तो ये कंडीशन यदि हम अप्लाई करछोती ताले हमर फार्मूला k ର वैल्यू के बार करथला हमें x by y minus 1 by y by z minus 1. तो y by z केते इक्वल 1, y equal to z ना, y by z केते इक्वल 1, तो 1 minus 1 केते 0, k ର वैल्यू केते इक्वल इनफाइनाइट है ना. नहीं एक डायरेक्शन में बेसी ହେଇଛି and other two direction equal ହେଇଛି, तार वैल्यू केते अछि इनफिनिटी पाखा देखिस है. ये जोटा देखो सर इट इज सिमिलर टू दिस, तो मैं एक भी देखि पारी दिस थिंग that on the axially symmetrical extension. Come on, axially symmetrical extension. This comes to axial symmetric shortening. So in this condition, if we calculate the x minus y, x by y minus 1 by y by z minus 1. So x by y, its value will be 1 because x equal to y. So it will be 0 by 1, 0. So axial symmetric shortening it will produce ungulate spheroid. Plane strain condition. In plane strain condition, for s greater than y equal to 1 greater than z. So y equal to 1 y direction. The extension is co direction. X out z direction, x obviously अधिक होगा z direction में कम. So it में ଗୋଟେ particular value पाई और plane strain में k ର value केते ହେଇପାରିବ 1 ହେଇପାରିବ. k ର value केते ହେଇପାରିବ 1 ହେଇପାରିବ. मतलब x by y, x ର value ଅଛି, y ର value ଅଛି, by में y by z करछो, तो y ର value 1, इटी y ର value 1 आसीबो. तो इटी x ର value और z ର value पुट कले गोटे टाइम रे मोर कार value रो रेशियो 1 आसीबो. तो perfectly plane strain condition में मोर k is equal to हम केते 1. तो k इको 1 in case of plane strain condition. हमर आसीबो यदि k equal to 1 हैला ताले plane strain, so approach plane strain. यदि 1 to 0 भीतर हैला ताले flattening strain. यदि 1 to infinity भीतर हैला ताले constrictional strain. There is extension, there is flattening. These are different types of strain ellipse. So salt dome, it is a domal type of structure produced from the salt. Simple. So salt dome is a type of structure dome found when salt or other evaporates. Evaporate means salty water evaporation way gypsum anhydrite
NaCl salt ये सब डिपोजिशन हुए ताको आम इभापोरेट तो इभापोरेट हो बा मोर सल्ट डिपोजिशन हो तो जितने से मैंने गोटे डोमाल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करती से सल्ट ऑफ सो ये जो प्रोसेस रे एम्प्लेस होती डायप्रिज्म कहे जो प्रोसेस रे एम्प्लेस होती डायप्रिज्म कहे जो आम इंट्रुजन कहते धर लाकोलिथ तुम नहीं जाओ लाकोलिथ हूँ कौन डोमाल सेप तो से इंट्रुजन होपर डोमाल सेप कर से सल्टा इंक्लूड कर डोमाल सेप कर इंट्रुसिव कहते डायप्रिज्म प्रोसेस तो सल्टम हाँपाई तुम कौन जगह गोटे जगह सल्ट डिपोजिशन हवा दरकार सो रिक्वायर्ड कौन सल्ट बेड फास्ट सल्ट बेड कौट डिपोजिट हम जो लुण मरा जाए कि देख लुण मरा जाए आम के जिते हाई टाइड आसो तो जो छोट छोट सब बंधे दिखती ब्यारिकेड करके कादुरे तो से पानी रही जाए लो टाइड जो से जगह पानी रही जाए तापर इवापोरेशन होती सल्ट डिपोजिशन तो इम्पोर्टाट जिन तुम इवापोरेशन गोटे प्रोसेस जो कि सल्ट डिपोजिशन NaCl था NaCl रेसिडेंस टाइम बहुत अधिक है बहुत समय पर्यटन से पानी डिजल्व तो इवापोरेशन गोटे प्रोसेस जो कि डिपोजिट तो जेहेतु इवापोरेशन जो जगह अधिक हो दैन इनपुट से जगह तुम्हें सल्ट डिपोजिशन पाई है सपोज धर कि तुम्हें गोटे जगह कंटेनर सल्ट वाटर रख ठीक है तो ये जो इवापोरेशन हवा स्टार्ट हम ठीक है तो वाटर डेनसीटी बढ़ी बढ़ी चले एग्जाम्पल तुम नहीं डेड सी शुण डेड सी हूँ से गोटे जगह जो जगह तुम इवापोरेशन अधिक जेहतु इवापोरेशन हो वाटर डेनसीटी धीरे धीरे इनक्रीज कर तो एमती जदि तुम ग्राजुअली जो इवापोरेशन हो तो तुम्हें कौन कल कि किस समय पुणी पानी ऐड कर दो पुणी से ओरिजिनल कंडीशन को पलैस ठीक अच्छे बट जब तुम पानी ऐड न कल ताले इवापोरेशन ही कंप्लीटली गोटे लेयर ऑफ सॉल्ट तले बस लेयर ऑफ सॉल्ट तले बस बुझे ना तो से भाया जेकोसी गोटे बेसिन सल्ट बेसिन थी लागुनाल एरिया अच्छी है ना जदि से जगह इवापोरेशन टा बहुत अधिक इवापोरेशन जब एक्सीड कर अधिक दैन और इनफ्लो ऑफ वाटर माने इवापोरेशन विल एक्सीड द इनफ्लो यदि वर्षा हो कि पानी कौन सोर्स नर मिस तो से जगह कौन सल्टर कंसंट्रेशन बढ़ी बढ़ी चलो एंड दे कैन फ्रॉम इवापोरेट बेड बिलो द और at the base of the lake. The water body base में कहाँ इवापोरेट प्रोड्यूस कर ये बड़ा मल्टीपल इवेंट जितने हम गोटे थर तो गोटे बेड है पुणी धर पूरा इवापोरेशन पुणी तापर पानी पशिगला पुणी कट ऑफ होगला तो एमती मल्टीपल इवेंट से जगह गोटे बड़ सल्ट बेड डिपोजिशन तो सल्ट बेड डिपोजिशन है सल्ट कैरेक्टरिस्टिक होची से कौन करे एक्सपैंड करे तुम यदि कौन थिंग ऑब्जेक्ट सपोज धर एमती अच्छी जब एठी प्रेसराइज कल ये दुईटा जगह से जगह एमती डोमाल हम कि नहीं तुम दी साइड दुटा प्रेसर कले मझी पार्टा कौन राइज कर तो से डिफरेंशियल प्रेसर जो सल्ट बेड ऊपर पड़े सल्ट उपरू एक्सपैंड करा चेष्टा करे वन से इनिशिएट हो गले धीरे धीरे से कौन ऊपर को राइज करे और ऊपर बेड को कौन करे बेड करके डोमाल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करे सल्ट डोम सब तुम लिखाई restricted basin थी और in this basin the outflow water exceeds the inflow जो कि बाहर जाऊ तो that amount will be more than the inflow जो कि the basin loses water through evaporation resulting precipitation deposition of salt तो ये बड़ा कंडीशन रे और मल्टीपल पीरियडिक एपिसोडिक इवेंट रे से डिपोजिशन करिवो कोन
salt beds of diffusion, multiple event रे salt bed diffusion produce हो. ତାପରେ କଣ ହବ ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ ଲୋଡିଂ ଯୋଗୁ ହେଲା ଯୋଉଟା କହିଲି ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଫୋର୍सेस ଯୋଗୁ ସଲ୍ଟ ଗୁଡା କଣ ହବ ଉପରକୁ ରାଇଜ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଡିସପ୍ଲେସ ହବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା और थर्मल ग्रेडिएंट ଯୋଗୁ थर्मल ग्रेडिएंट ମାନେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଫ ସପୋଜ ଧର କି ଅଧିକ ହଟର ଅଛି ଦେନ୍ ଅଦର पोर्शन तो ସେଠି କଣ କୋଲ୍ଡର पोर्शन हटर पोर्शन दुटा रहा हटर रू कोल्डर को सब कौन फ्लो कर वाटर भी फ्लो कर कनसेंट्रेशन ग्रेडिएंट गोटे क्रिएट हो तो थर्मल ग्रेडिएंट कौन तो थर्मल ग्रेडिएंट जो भी सल्ट टा कौन मूव कर तो यही सब कंडीशन आसिले तो ग्रेजुअली जो सब कंडीशन सल्ट ऊपर पड़ो सल्ट बेड ऊपर तो गोटे टाइम आसो सी कौन डोम डोम भाया यूज कर है तो फ्लो ऑफ द सॉल्ट ओवरकम द स्ट्रेंथ ऑफ द ओवरबर्डन ता ऊपर जहां भी डिपोजिशन अछि ताको ओवरकम करिवो एंड देन एक्सटेंशन है कि तुम्हारा ग्रेजुअली ऊपर को राइज कर जोटा कि वर्टिकली ग्रो कर तो सॉल्ट फॉर्मेशन जेहेतु ऊपर को कौन फोर्सफुली राइज कर से जगह तुम फल्टिंग हो एक्सटेंशन स्ट्रक्चर हो ये सब प्रोड्यूस होता है तुम कम्प्लीटली जहाँ ओवरबर्डन अच्छी ये ब्रेक करके पड़ेगा तापर ग्रेजुअली सी कौन कल ऊपर को रही इंट्रूजन आकार रही जो तुम्हें कि कौन लाकोलिथ कि कौन टाइप इंट्रूजन टाइप ऊपर को राइज करके इंट्रूज कर जोटा जे फास्ट जिनिस होची गोटे सॉल्ट बेड डिपोजिशन है इवापोरेशन थ्रू रे देन ड्यू टू डिफरेंशियल फोर्सेस हो डिफरेंशियल ग्रेविटेशनल फोर्स हो बा थर्मल ग्रेडिएंट जोटा को जगह अधिक हटर कंडीशन थी को जगह कोल्डर कंडीशन अच्छी तो सेही कंडीशन जो सॉल्ट ऊपर को राइज करने चेष्टा करे तो से सब से सफिशिएंट हो तो ये कौन करियो ओवरबर्डन को ब्रेक करके से थ्रू रे ऊपर को राइज कर राइज करके गोटे डोमार स्ट्रक्चर प्रोड्यूस कर ताको हम कौन सॉल्ट बोलते हैं प्रोसेस इज कॉल्ड एज डायप्रेशन तो फिर डायपर इज टाइप ऑफ इग्नियस इंट्रूजन तो कौन इग्नियस इंट्रूजन सॉल्टम ता होची इवापोरेट इंट्रूजन इग्नियस इंट्रूजन व्हिच मोर मोबाइल एंड डक्टाइल डिफॉर्मेबल मेटल इज पोर्स इनटू ब्रिटल ओवरलाइंग रॉक the same thing like intrusion so मैंने the fracture of the brittle rock भितर forcefully inject हुआ तो डायपर नॉर्मली बेले बेले तुम्हारा नॉन इग्नियस रॉक पे यूज हुए जैसे कि सॉल्टो मॉडफ्लो एवरा सब पे भी डायपर वर्ड यूज करा जाए सॉल्ट डायपर भी कुआ जाए सॉल्ट डोम भी कुआ जाए मॉड डोम भी कुआ जाए मॉड डायपर भी कुआ जाए चला तो एटा ठीक है सेवला टर्म अछि बा ठीक है कंट्रोवर्शियल कि डिफरेंट ग्रुप में डिफरेंट टाइप आइबो सेम प्रोसेस डिफरेंशियल ओवरबर्डन है ना ताजो को राइज कर तो सेटी सॉल्ट ओवर खाली प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेड टाइप गुडा एटी से सेम वे रे जोगुडा राइज करन ऊपर को डिफरेंशियल लोडिंग जो सेमते राइज हां सॉल्टम रो बहुत इकोनॉमिक इंपोर्टेंस पर पेट्रोलियम का बहुत पेट्रोलियम रिजर्व सॉल्टम बा इवापोरेट से इवापोरेट रे तुम है